Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about the chapter number 2. Today, we are going to solve few examples based on the chapter number 2 and also the parallax method. So, the first question is given as example number 2.2. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. Okay, so there is a man standing somewhere at a point A, and he wants to just estimate the height, the distance of the tower. Stand at a point A in front of a tower C. Tower is C. There is a tower C, and the person is standing in front of that tower. Okay, and spots a very distinct object O on the line of AC. He then walks perpendicular to AC up to B. Okay, then he starts to walk perpendicular to AC till the distance when he reaches at the point B, and the distance between B and A is given as 100 meter. So the person walks from A to B 100 meter. Now he looks at O and C again. Since O is very distinct, the direction BO is perpendicular the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta that is equal to 40 degree. So now what is happening here? The thing that is changing is the person first see the object O from A, and then he moves from A to B, and again he sees the top point of the tower, and he observes that the angle changes theta that is equal to 40 degree. Angle changes that is equal to 40 degree. What it means? It means कि जो person है वो A point पे खड़ा था, उसने सबसे पहले देखा टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को, फिर उसने क्या करा, उस बंदे ने उस टावर के परपेंडिकुलर B तक मूव हुआ, that is 100 मीटर डिस्टेंस. वापस से उस पर्सन ने B पे पहुंचने के बाद टिप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व किया, देन ही ऑब्जर्व दैट साइड ऑफ एंगल चेंजेस विद द 40 डिग्री ऑफ एंगल, मतलब 40 डिग्री का उसके अंदर चेंजेस आया. ठीक है, नाउ थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स. ठीक है, एंगल ऑफ पैरेलैक्स. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन. ओके फाइन, गॉट इट. चलिए, तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडियोलॉजी आ गई है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक टावर है, टावर के सामने एक बंदा खड़ा है ए पॉइंट पे. उस बंदे ने टावर की टिप को ऑब्जर्व किया, देन ही द पर्सन स्टार्ट्स टू मूव perpendicular to the tower that is AC and reaches to the point B which is 100 meter distinct from the point A. Now he sees that the change of side is theta is equal to 40 degree, and that is what the given in the question. And now we have to find out the height of the tower. It means we have to find out the value of AC. Ultimately AC we have to find out. Angle theta is given as a 40 degree and AB is given as 100 meter. This is a simple question of the trigonometry. Even we don't want to use the parallax method. Yeah, it could be solved by the simple methods of the trigonometry. It says that the angle is 40 degree theta. So it means this one side will be considered as the perpendicular, this one will be considered as a base, and this one will be considered as a hypotenuse. Now we have H, B and P. Simply just apply tan theta. Tan theta is given as perpendicular upon base. Perpendicular upon base. Here perpendicular is given as tan theta is equal to 40 degree. Perpendicular is given as 100 meter, and base is what we have to find out. Base is equal to AC. So AC could be written as 100 divided by 10 40. It will be equal to 100 divided by 10 40. 10 40 means to say 0.89. Okay, so 10 40 is concluded as 0.89. 0.89. So it will be something like 100 divided by 0.89. 100.89
approximately 119 meter, almost 119 meter. So this is how we can find out easily by the help of simple trigonometry by applying tan theta. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is given as 100 meter, base is what we have to find out, and angle theta is given as a 40 degree. So tan 40 is equal to 100 divided by SE. SE is equal to 100 by tan 40. Tan 40 can be written as a 0.89. So 100 divided by 0.89 will give you the result as 119 meter. So the height of the tower in this given question could be written as the height of the tower is 119 meter. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? बढ़े आगे? Now let's see the question number 2.3. Example 2.3. In example 2.3 it is given as the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. Okay, here we are getting a new term, that diametrically opposite. New term is introduced. Diametrically opposite का मतलब होता है ये है हमारी प्यारी सी धरती माता. Diametrically opposite मतलब कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है A, तो इस A पॉइंट से जो डायमीटर ड्रॉ होगा उसका जो सेकेंड एज ऑफ द सर्कमफेरेंस होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. तो A अगर यहाँ पे है तो अगर हम इस A पॉइंट से डायमीटर ड्रॉ करें तो उस डायमीटर का दूसरा पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे आ रहा है उसी को हम कहेंगे पॉइंट B. Here A and B are diametrically opposite. It could be written as also, अगर A यहाँ पे है तो B यहाँ पे हो जाएगा. अगर A यहाँ पे है diametrically opposite, B यहाँ पे हो जाएगा. अगर A यहाँ पे है तो diametrically opposite B यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, A and B. Now let's solve the question. See what other things are given. So it is given as the moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on the earth. तो ये है हमारे चंदा मामा, ये है हमारी प्यारी सी धरती माता, ये है point A diametrically opposite point B, and the moon is observed from point A and point B. Point A and point B. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree and 54 minutes. So here the angle theta is given as 1 degree 54 minutes. 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to the power 7. Here the diameter of earth is also given as, it could be written as basis. The distance between two observation points is also called as a basis in the parallex method. So the basis is given as the earth diameter as 1.276 into 10 to the power 7 meter. 1.276 into 10 to the power 7 meter. So angle is given, one side of the triangle is also given. Now what we have to do, we have to find out the value of, compute the distance of the moon from the earth. Okay, now we have to find out the distance of the moon from the earth. This is what is given in the question. अर्थ के टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को, और हमें एंगल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 डिग्री एंड 54 मिनट, एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 1.276 into 10 to the power 7 meter, and we have to find out the distance of the moon from the earth. Now how we are going to use it? The parallex method. As we know, the parallex method states that angle theta is equal to arc upon radius, or by applying in the given problem we could say that angle theta is equal to arc
arc, or we can say the basis, that is 1.276 into 10 to the power 7 meter divided by radius. This one is considered as the radius, because if we consider this one as an arc and we make a arc by taking the center as the center of the moon, we will going to get that this one is the radius. This one is the radius, and this value is what we had to find out, the distance d. Okay, so d could be written as d is equal to 1.276 into 10 raised to power 7 meter divided by theta, and theta is given as 1 degree and 54 minute. Now क्वेश्चन अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल जो थीटा है उसे हम डिग्री में ले, मिनट में ले, रेडियन में ले या किस में ले, तो सिंपल सा लॉजिक है. देखिए लेंथ की ऐसा यूनिट ले रखी है हमने यहाँ पे मीटर, कोई दिक्कत नहीं है. सेम थीटा की भी हम कौन सी यूनिट कंसीडर करेंगे, ऐसा यूनिट, और एंगल थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन. एंगल थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन. तो यहाँ पे हमें इस 1 डिग्री एंड 54 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेडियन के अंदर, और उसके बाद हम उसे डिवाइड करेंगे into the 1.276 into 10 to the power 7 meter. So let's just convert the value of 1 degree and 54 minute into the radian. So as we know, it could be written as 1 degree plus 54 minute. तो पहले इस 54 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर, और फिर इस डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे हम रेडियन के अंदर. तो देखते हैं, एक डिग्री के अंदर होते हैं हमारे 60 मिनट, तो एक मिनट के अंदर हो जाएगा हमारा 1/60 डिग्री. तो 54 मिनट के अंदर हो जाएगा हमारा 1/60 into 50 डिग्री. So this is the conversion of 54 minutes. This is the conversion of the minute to the degree. Now we could say that 1 degree plus 54 minutes could be written as 54 divided by 60. This one is also in the degree. Now to convert the degree into radian, what we do basically, as we know, whenever got confused, comes to the basic. यूनिट कन्वर्जन में कभी भी गलती नहीं करनी है, फटाफट नहीं करना, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादा ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिक से चलिए, कभी गलत नहीं होगा. तो सबसे पहले हमने मिनट को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में. अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आ गई है डिग्री में. अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. तो कैसे करेंगे, एज वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियन, और वी कैन से 3.14 रेडियन. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. तो 1 डिग्री की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3.14 into 3.14 divided by 180 रेडियन. चलिए ठीक है, करते हैं. तो इस डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3.14 divided by 180. तो 1 डिग्री एंड 1 डिग्री प्लस 54/60 डिग्री can be converted by multiplying 3.14 divided by 180 रेडियन. तो ये क्वांटिटी आ चुकी है हमारी एंगल थीटा इन रेडियन. सोल्व करते हैं. As 54 divided by 60, it could be written as 27/30. So 30 is the LCM, 30 is the LCM. It could be written as 30 plus 27. 30 plus 27 multiplied by 180, and at the top here is 3.14. So this is the value of angle theta in radian. Let's substitute the value of angle theta in the previous equation. That is, this one is the equation number 1. Putting the value of theta in radian in equation number 1, what we are going to get? We are going to get something like 1.276 into 10 to the power 7
divided by theta d. D is equal to 1.276 into 10 to the power 7 divided by angle theta, and theta is given as 30 plus 27 into 3.14. यहाँ पे डिवीजन में हमारा 30 into 180, तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30 into 180. इसको सॉल्व करेंगे 30 plus 27 that is equal to 57. 1.276 into 30 into 180 into 10 to the power 7 divided by 57 into 3.14 is equal to पॉइंट गया, एक जीरो आया, जीरो से जीरो कटा, 3.14 cancel out by 3, and that will gonna give you as 1.276 into approximate, it will gonna give you the 3.84 into 10 to the power 8. 3.84 into 10 to the power 8 meter. So the value of D is, it is a simple mathematics, okay? First we have to put the value and then simple multiplication and the division, you are gonna get the value as D is equal to 3.84 into 10 to the power 8 meter. And what is D here? Here D is the distance of the moon from the earth. So we have just find out the value of D, the distance of the moon from the earth, by the help of parallex method. Is it clear to everyone? Example number 2.3 is completed. Let's move to the example number 2.4. The sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds. The distance D of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the power 11 meter. What is the diameter of the sun? Kind of a simple question. Let's see what it is going to tell us. That the sun's angular diameter. देखिए angular diameter का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये सन है, ये सन का सेंटर है. Angular diameter. Let's see. ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ए पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं. सबसे पहले टेलीस्कोप को कहां पे सेट किया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कहां पे सेट किया? वन एज ऑफ द सन पे कंसंट्रेट किया, सेंटर किया. उसके बाद एंगल चेंज किया. कहां तक? जब तक कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सेकेंड एज ऑफ द सन पे कंसंट्रेट ना हो जाए. अब जब हमने सन के एक एज से स्टार्ट करके दूसरे एज पे एंड अप किया है, तो वो एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर की हमने? डायमीटर की इक्वल डिस्टेंस कवर की है. बट किस फॉर्म में कवर की है? इन द टर्म्स ऑफ एंगल. एंगल की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम गए हैं विद रेस्पेक्ट टू सन. इट मींस द डायमीटर ऑफ सन इन टर्म्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डायमीटर. और इस एंगुलर डायमीटर की वैल्यू हमें दे रखी है 1920 सेकेंड. द एंगल थीटा इज गिवन एज 1920 सेकेंड्स. तो हमें एंगल दे रखा है 1920 सेकेंड्स और हमें दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ. हमें दे रखी है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है डी. कैपिटल डी दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 meter. डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ दे रखा है और हमें दे रखा है एंगुलर डायमीटर मींस टू से एंगल थीटा इन सेकंड्स. 1920 सेकंड्स में दे रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सन. हमें निकालना है बेसिस की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी. सो एंगल थीटा इज रिटन एज एंगल थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, और वी कैन से द बेसिस अपॉन
distance theta is equal to b by, we have to find out the value of b. b could be written as theta into d. तो यहाँ पे हमें दे रखा है एंगल थीटा 1920 सेकेंड्स इंटू डी की वैल्यू दे रखी है हमें 1.496 और 1.496 into 10 to the power 11. अब हमें करना क्या है, सिंपली इस सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के अंदर. क्यों? क्योंकि 1.496 into 10 to the power 11 मीटर में ऐसा यूनिट में दे रखा है, लेकिन ये जो एंगल दे रखा है 1920 सेकेंड्स, ये आपका ऐसा यूनिट में नहीं है. तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ठीक है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा. तो 1920 सेकेंड्स को ऐसा यूनिट मतलब कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम एक टर्म होती है 4.85 into 10 to the power minus 6, 4.85 into 10 to the power minus 6. ये याद रख लीजिएगा, वेल एंड गुड रहेगा. कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना है तो कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर लीजिएगा. स्टार्टिंग में मैं प्रीफर करूंगा कि आप कन्वेंशनल मेथड फॉलो करें, जैसे कि आपने सेकंड को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में और डिग्री को कन्वर्ट कर लिया आपने रेडियन के अंदर. सिंपल हो जाएगा आपके लिए. और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो एक एग्जैक्ट फिक्स नंबर होता है 4.85 into 10 to the power minus 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियन के अंदर. तो 192 सेकंड जो है वो इक्वल टू होगा आपका 1920 into 10 4.85 into 10 to the power minus 6 रेडियन. तो ये आ चुकी है हमारे पास रेडियन में वैल्यू एंगल की, और जो डिस्टेंस दे रखी है वो ऑलरेडी मीटर में दे रखी है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द सन हमें मिल जाएगा. ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा. आ जाता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो हम अगली क्लास में से डिस्कस करेंगे. ठीक है.